to read today's chapter? I nominate my name. Please go ahead. Day 15. Forgiving yourself and those who have hurt you. Okay, so सबसे पहले आपको forgive किसको करना है? Self को. अभी मैं जब meditation record कर रही थी उसमें भी यही था. सबसे पहले you have to forgive yourself. Once you forgive yourself, only then you will be able to forgive others. So today's chapter is about forgiving yourself and others, ताकि वो जो अंदर आपके तकलीफ, जो दुख, जो एक चुभन है ना किसी और के किए हुए के लिए, जिसका आपने कुछ मीनिंग बनाया और जो आपको तकलीफ दे रहा है, आपने उससे कैसे निजात पानी है, उससे कैसे हील करना है. हाँ जी, पढ़े. Today's lesson is about forgiveness. Forgiving yourself and those who have hurt you. Thus, opening your heart to a new level of loving yourself. For the past 2 weeks, you have worked on releasing many of the old beliefs that were blocking you. I know it wasn't an easy task, so give yourself time to celebrate your progress. How does it feel today? Look in your mirror and feel so much lighter. Take a deep breath in. Now release this breath and say, I'm letting go of my past and I feel great. जितना भी हर्ट होता है ना हमारे पास, हमारी जिंदगी में जो भी चीज हमें तंग कर रही होती है, दुख दे रही होती है ना, वो हमेशा पास्ट से रिलेटेड होती है. उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मुझे ऐसा बोल गया, ये लेडी आई, इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया. तो वो बोल दिया मतलब पास्ट में हुआ ना, अभी तो नहीं हो रहा है, कुछ देर पहले ही हुआ, तो पास्ट हो गया. तो कुछ पास्ट में हुआ होता है जो हमें आज भी तकलीफ दे रहा होता है, क्योंकि हम उसको लेट गो नहीं कर पा रहे होते. हम उसको अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, उसको ढो रहे होते हैं अपने साथ. उसका बोझा जैसे होता है ना, जैसे लोग लैपटॉप पीछे टांग लेते हैं ना अपना और खींचते जाते हैं साथ साथ जहां भी जाते हैं आजकल. तो उसी तरह से हम उसको पीछे बोझे को ढो के अपने ऊपर साथ में लेके चलते रहते हैं. और वो एक नहीं है, न जाने कितने हैं. एंड नो वंडर हमें अपनी लाइफ एक बोझ लगती है. इसीलिए लगती है बिकॉज हमने इतना पास्ट ढो रखा है अपने ऊपर. एंड hurt is always because of the past and worry is always about the future. So अगर present में आप anxious हो, anxiety है, stressed हो, there are only two things to look at: something from the past or something concerning your future. Present में तो हमेशा bliss है. Present is always blissful. उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको तकलीफ दे. बट जब आप एक सेकंड के लिए भी पास्ट में चले जाते हैं, वो पास्ट का कुछ बोझ जो है, वो पास्ट का कोई हर्ट जो है, वो आपको फिर नीचे ड्रैग कर देता है और आपके प्रेजेंट को भी तबाह कर देता है. हाँ जी. तो द बेस्ट थिंग टू डू इज लेट गो ऑफ दैट पास्ट. इट इज नॉट सर्विंग यू एनी मोर. इट इज नॉट. हर्ट कभी भी सर्व नहीं करता. हाँ, इंसिडेंट से लर्निंग लेके यू कैन गो फॉरवर्ड, बट हर्ट नेवर सर्व्स यू. हाँ जी. Forgiveness is a difficult area for all of us. We build up these blocks that bind us for many years. Take my hand and together, let's work on learning to forgive ourselves and those who have hurt us. You can do it. Yes, we all can do it. हाँ जी. Forgiveness opens our hearts to self-love. If you have a problem with loving yourself, you can get stuck in an unforgiving state. Many of us carry grudges for years and years. We may feel self-righteous because of what someone did to us. I call this being stuck in the prison of self-righteous resentment. We get to be right, but we never get to be happy. Yes. अगर हमें ये लगता है कि किसी को आके हमें कुछ बोलने का हक नहीं है, how dare that person come and say this to me? That means जो मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है. I am being right. हमेशा जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है या किसी रिश्ते में कुछ भी दरार आती है या तालमेल में कुछ गड़बड़ होती है, the only reason is being righteous. मैं सही हूँ, आप गलत हो.
एंड उसमें क्या होता है, आपको ये तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप राइट हो, पर आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती है उस टाइम पे. यू डोंट फील हैप्पी अबाउट इट. यू ओनली फील दैट आई एम राइट. अपनी गर्दन अकड़ा के बोलते मैं सही हूँ, मैंने जो बोला वही 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 सही है, तुम गलत हो, जो तुमने कहा वो गलत था. अरे भाई, एवरीबडी इज राइट. एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियंस. एवरीबडी हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज. और हमेशा क्लैश पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियंस का ही होता है, इंसानों में कभी नहीं होता. एंड उसमें भी क्यों होता है? बिकॉज एवरीबडी फील्स कि वो सही है. दैट सेल्फ राइचियसनेस लीड्स टू अनहैप्पीनेस and strained relationships also. Anji. You may disagree and say, but you don't know what the person did to me. It's unforgivable. Being unwilling to forgive is a terrible thing to do to yourself. Bitterness is like swallowing a teaspoon of poison every day. It accumulates and harms you. It's impossible to be healthy and free when you keep yourself bound to the past. हाँ, मैंने पहले भी शेयर किया था, इस बुक में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, जब हम लोग रिजेंटमेंट को बहुत सालों तक पकड़ के बैठे रहते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉजिंग कैंसर इन द बॉडीज, बिकॉज दैट इज लाइक swallowing poison every single day. स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं आप अपने आप को. Every single day you are having poison. I remember when I was in Landmark, तो हमारा एक सेशन चल रहा था, उसमें एक लेडी थी एंड उसमें कोई सेशन था जिसमें था कि यू हैव टू write a letter to your father. She says, I will not write to him. For me, he doesn't exist. And तो जो लीड कर रहे थे उन्होंने बोला कि do you know how much poison you are carrying with yourself? And you have passed on that poison to your children. कहती कैसे? उनको तो पता भी नहीं कि उनके नाना है. So he says, can you see how much poison you have? That you haven't even told the children that they have a grandfather. And she said, but how did I, मैंने उनको poison कैसे दिया? So he says, you have been holding on to it for how many years? So she says, around 10 years. कहता 10 साल से तू अपने अंदर ये poison लेके बैठी है. एंड तुम्हारे बच्चे कितने साल के? कहती है एक 6 साल का और एक 4 साल का है. तो कहता है कि हैव यू फेड योर चिल्ड्रन? बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के ब्रेस्ट फीड पे तो रहता है ना, तो ये फेड दैट मिल्क टू दोस चिल्ड्रन एंड दैट कंटेन्स दैट पॉइजन, बिकॉज दैट पॉइजन इज विद इन योर बॉडी एंड यू हैव ट्रांसफर्ड दैट पॉइजन टू दोस किड्स. इफ वी डोंट लुक एट लाइफ लाइक दैट, हमें नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, बट ये सच है. जितना गुस्सा, जितना रिजेंटमेंट, जितना एंगर हम अपने अंदर लेके बैठते हैं दूसरों के लिए, उसका नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा हो रहा है. मेंटल पीस नहीं है, physically also it is harming us. So it is very important that you forgive them, and before that you have to forgive yourself for holding on to it for so long. हाँ जी, पढ़ें. One of the biggest spiritual lessons you can learn is to understand that everyone is doing the best they can at any given moment. Yes. People can do only so much with the understanding, awareness, and knowledge they have. Invariably. देखा, मैंने अभी बोला था ना ये. I said this, and this is in the same chapter. Yes. So it says that people are doing their best they can at any given moment. People can do only so much with the understanding, जितनी उनको समझ है, awareness, जितनी उनको उसके बारे में जानकारी है, knowledge, जितना उनको ज्ञान है, उसके बेसिस पे वो अपना बेस्ट कर रहे हैं उस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे. हो सकता है किसी और मोमेंट पे किसी और तरह से रिएक्ट बोले, बिकॉज उस टाइम पे हो सकता है उनके अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो, अब उनकी अवेयरनेस बढ़ गई हो, है ना, या उनको नॉलेज मिल गई हो, बट एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम
उस मोमेंट पे जो वो कर रहे हैं अपना बेस्ट कर रहे हैं. So अगर आप इस चीज को देखेंगे ना, every time anybody comes and says something to you which you are not liking it, or it is not up to your expectations, just remind yourself, अरे ये इंसान जितनी इसको समझ है, जितना इसको ज्ञान है, जितनी इसको अवेयरनेस है, जितना इसका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से इस मोमेंट पे वो अपना बेस्ट ही कर रहा है. ये कह के छोड़ दो उसको. पर छोड़ना आसान हो जाता है जब आप ये इस चीज को समझ लेते हो. हाँ जी. Invariably, people who mistreat others were themselves mistreated in childhood. The greater the level of violence, the greater their inner pain, and the more they may lash out. This is not to say that their behavior is acceptable or excusable. However, for their own spiritual growth, you must be aware of their pain. या The incident, कितनी बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कभी अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते. जैसे हमारे जमाने में तो कहाँ एक्सप्रेस करते थे पेरेंट्स प्यार. कभी कभी उन्होंने हग नहीं किया था, कभी उन्होंने आई लव यू नहीं बोला था, कभी उन्होंने किस नहीं किया था. मेरे तो कभी मम्मी के गोद में सर रख के लेट जाते थे, कहते थे, उठ, मेरा मेरा गोडा दुख गया. लाइक दैट. So I never experienced that love from them. Why? If I hold them again, if I hold this against them, it will hurt me. But if it's spiritually, if I look at this the way it is explained here, उनको अपनी जिंदगी में मिला ही नहीं, उनको क्या पता प्यार क्या होता है, कैसे एक्सप्रेस करना होता है. तो सिमिलरली जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, मतलब फादर बहुत गुस्से वाले होते हैं, उनके सामने कोई बोल नहीं सकता. And people feel scared in front of them. They don't want to share their feelings or emotions or opinions in front of them. Why? Because उनको लगता है ये तो सुनने वाले नहीं है तो अपनी चलाते हैं, तानाशाह हैं, लोग ऐसे भी बोल देते हैं. But just go beyond that and see why that person is like that. Maybe because that is how he was brought up. Maybe that was the kind of environment he was, brought up in. उनको वही सब पता है. So when you start looking beyond and into their lives, आपको गुस्सा नहीं आएगा. Yeah, like recently there was a case, like मेरे पास कोई आया था. That lady's been married for so many years and now she's confessed that she's a lesbian. And her husband is very upset. And मतलब बहुत ज़्यादा घर में वो चल रहा है. I just told him one thing. I said, you know what? You don't know what she is going through. उसका इमोशनल ट्रॉमा नहीं तुम समझ सकते हो कि कितने टाइम से वो इस चीज से जूझ रही होगी. क्या 12-13 साल शादी भी हो गई, 8-9 साल का बच्चा भी है, तो उसकी अटैचमेंट तुम्हारे साथ भी है, बच्चे के साथ भी है. एंड देन शी इज डीलिंग विद whatever she is dealing with. At this time, everybody is just pointing fingers at her. And this time, she needs you. Can you understand what she's going through? And when I was talking to him, he could actually understand that, yeah, it is a very difficult period for her. I said, don't be against her right now. Just be with her. You don't know what she's dealing with. पर ऐसे कौन दिखता है? Everybody is just pointing fingers. ऐसे कैसे कर सकती है वो? इतने साल तक कैसे नहीं बताया? अब कैसे बता रही है? धोखा दिया उसने. मतलब क्या कुछ नहीं बोलती दुनिया. But they don't understand what the person is going through. उसके पीछे उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है? It's so easy to point fingers. So similarly, when something happens in your life, we hold that person, responsible. किसने मेरे साथ ऐसा किया and वैसा किया. But then, just look at this. उसकी जिंदगी में क्या हुआ होगा ऐसा कि वो ऐसा हुआ. Yeah. So this is very deep. हाँ जी पढ़े. the incident you are holding on to is over, perhaps long over. Let it go. Allow yourself to be free. Come out of this personal prison you have built and step into the sunshine of life. If the situation is continuing, then ask yourself why you think so little of yourself that you still put up with it. Why do you stay in such a situation? हाँ,
तो जिस भी बात को लेके आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, हर्ट हो रहे हो, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मतलब I was talking to a girl sometime back and she was telling me कि जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो उसकी सास ने उसकी केयर नहीं करी, एंड बच्चा कॉलेज में है, and she's still holding on to that. She's holding on to that. Imagine करो कितने साल हो गए, 20 साल तो हो ही गए ना, 18, 19, 20 जितने भी है, and she's still holding on to it, hurting herself. She is actually stuck in that prison ना. उसने अपने आप को उसी जेल में बांध के रखा हुआ है कि ये मेरे साथ हुआ क्यों था, ऐसा क्यों हुआ था. बट यू डिजर्व मच मोर देन दैट ना यार. जस्ट लेट इट गो, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दैट प्रिजन. या हाँ जी पढ़े. You have a choice. You can stay stuck and bitter, or you can do yourself a favor by willingly forgiving the past and letting it go, and then moving on to create a joyous, fulfilling life. You have the freedom to make your life anything you want it to be because you have freedom of choice. हाँ देखो, जब तक आप शुड में रहोगे तो चॉइस आएगी नहीं. जब तक आप शुड में हो ये कि ऐसा ही होना चाहिए, तब तक तो चॉइस है ही नहीं. बट द मोमेंट यू नो दैट यू हैव अ चॉइस, you have a choice to forgive that person or forgive yourself and move forward. Or you still have a choice कि आपको अपने आप को प्रताड़ित ही करना है, विक्टिम बन के रहना, तो वो भी आपकी चॉइस है. बट यू हैव दैट चॉइस कि आपको उसमें रहना है या आपको अपने आप को उससे निकाल के एक खुशहाल जिंदगी जीनी है. हाँ जी. The purpose of today's lesson is to help you raise your self-esteem to such a level that you will allow only loving experiences in your life. Please do not waste your time trying to get even. It will not work. What you give out always come back to you. So Yes. drop the past and work on loving yourself now. Then you can have a wonderful future. Yeah. So देखो, the purpose of today's lesson is to help you raise your self-esteem. अब इसको सेल्फ एस्टीम को कैसे आपने रेज करना है, बिकॉज ओनली देन इट विल अलाउ यू टू लव योरसेल्फ एंड एक्सपीरियंस इट. या तो आप उनके लेवल पे वापस चले जाओ जो उन्होंने किया, आप उनके साथ, अच्छा तूने ऐसा किया, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं या मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं. या तो आप उसी लेवल पे अटके रहोगे. उसी लेवल पे रहोगे तो यू कैन नेवर फॉल इन लव विद योरसेल्फ, बिकॉज मिरर में खड़े होके अपने आप को आई लव यू बोल ही नहीं पाओगे, because that will be driving your life. So drop the past, usko chhod do. Only then you can have loving thoughts about yourself, because kahin na kahin to aap responsible ho na us cheez ke liye. अगर आपने उसको पकड़ा हुआ है तो पकड़ा तो आप ही नहीं हुआ है ना. So जब तक उसको छोड़ोगे नहीं तब तक loving thoughts आएंगे ही नहीं. So the only thing you can do is let go of it, because it is not helping you, it is not serving you, it is only giving you pain, it is giving you that peace of mind नहीं है आपके पास, आपके हेल्थ में इम्पैक्ट कर रहा है और आपके एनवायरनमेंट में बाकी लोगों को भी इम्पैक्ट कर रहा है. So is it worth it? No. So you have a choice. If you want to create a wonderful future, you have to let go of your past. क्योंकि पास्ट के बेसिस पे आप अपना फ्यूचर नहीं क्रिएट कर पाओगे, फिर वही बार बार होता रहेगा. और अगर उसको आप लेट गो कर पाओगे तो उस खाली जगह में एक नया फ्यूचर क्रिएट कर पाओगे. हाँ जी. One of the most valuable lessons I have learned is that when you do your forgiveness work, it is not necessary to go to the people involved and tell them that you forgive them. Sometimes you will want to do this, but you do not have to. The major work in forgiveness is done in your own heart and in front of your mirror. हाँ, this is so easy ना. क्यों है ना अरुण, लैंडमार्क में तो जाके बोलना पड़ता था कंप्लीट करने के लिए. Remember, forgiveness is seldom for others, it is for you. तो आपने जब आपने फॉरगिव करना है किसी को, आपको उसके पास जाके माफी मांगने की जरूरत नहीं है.
क्योंकि अगर आप वो करना पड़े तो आप शायद कभी करोगे भी नहीं. Something will stop you from going there and saying to that person sorry. हो सकता है कभी कभी आपको लगे भी कि वो करना चाहिए. हो सकता है आपको अपने हस्बैंड से किसी बात पे गुस्सा आया ना, यू वांट टू गो एंड से आई एम सॉरी यार, मैं आई मीन फालतू बोल गई या मेरे को गुस्सा आ गया. Sometimes you may just want to start and stand in front of the mirrors and forgive that person and forgive yourself. So it's not difficult. आपको सिर्फ मिरर में खड़े होकर बात करनी है अपने आप से, बट करनी सिंसियरली है, जेन्युइन होना चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ लिप वर्क कर रहे हो. जब तक आप अपनी आंखों में देखकर नहीं बोलोगे तब तक वो सिर्फ नाटक है. जब अपने आंखों में बोलकर देखकर फिर बोलोगे, then it is genuine, then it is real, and that will be impactful. हाँ जी पर. जी जी एक So many क्वेश्चन. people have told me Yeah, that they Manisha. have, 1 second. Manisha. In the paragraph before, it is saying, please do not waste your time trying to get even. हाँ, तो वही तो बोला मैंने कि उसके साथ उसके लेवल पे पहुंचने की जरूरत नहीं है कि तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तेरे को दिखाती हूँ कैसे करना है. आई विल टेल यू हाउ टू, यू नो, हाउ डिड यू डू दिस टू मी. तेरे से बदला लेके रहूंगी मैं. तो इवन होना मतलब बदला लेना. या हाँ जी. so many people have told me. या प्लीज नीचे कीजिए थोड़ा इसको प्लीज, ज्यादा ऊपर हो गया. हाँ. So many people have told me that they have truly forgiven someone, and then a month or two later, they have received a phone call or email from that person asking to be forgiven. This seems to happen most often after doing forgiveness exercises in front of a mirror. So as you do the mirror work exercises in today's lesson, let yourself experience your feelings deeply. हाँ, तो शी सेज कि many a time it happens कि आपने जैसे मिरर वर्क करके किसी को फॉरगिव कर दिया एंड आपने उसको नहीं बताया बट अपने आप ही उसको अपने ही मन से उसको फॉरगिव कर दिया. तो आफ्टर सम टाइम वहां से कोई उसी तरफ से उसी इंसान से आपको कोई मैसेज आ गया कि प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, यू नो. एंड इट हैपेंस बिकॉज इट इज ऑल फ्रीक्वेंसी ना. आपने जो भेजा वो वापस तो आना ही है आपके पास ना. आपने उसको फॉरगिव किया तो उसने वापस आके आपसे माफी मांग ही ली. तो ये होता है बिकॉज द काइंड ऑफ vibrations you have for that person will also start feeling that. हाँ जी. Let's affirm. As I forgive myself, it becomes easier to forgive others. Yes. So सबसे important है to forgive yourself. So to affirm, as I forgive myself, it becomes easier to forgive others. सबसे मुश्किल होता है अपने आप को माफ करना. और अगर अपने आप को कर लिया तो बाकी सबको माफ करना तो इज लाइक अ ब्रीज. वो तो बहुत आसानी से हो जाता है. हाँ जी. Your day 15 mirror work exercise, I believe you receive the most benefit from forgiveness work when you do it in front of a mirror. I suggest finding a mirror you can sit in front of comfortably. I like to use the long mirror on the back of my bedroom door. Give yourself time to do this exercise, and you will probably want to repeat it often. Most of us have a lot of people to forgive. हाँ, तो अब आपको क्या करना है, आपको बैठ के करनी है एक्सरसाइज, खड़े होके नहीं करनी है बिकॉज दिस विल टेक टाइम. तो बाथरूम मिरर के सामने खड़े होके मत करिएगा, किसी और मिरर के सामने बैठ जाइए. अगर कोई बड़ा मिरर लगा है, फुल लेंथ मिरर लगा हो कहीं पर, या जैसे ड्रेसिंग टेबल का मिरर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ दैट एंड स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज. हो सकता है आपको ये एक्सरसाइज रोज रोज करनी पड़े बिकॉज हमारे जिंदगी में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हमें माफ करना है, जिनके लिए हम बहुत कुछ अपने दिल में पकड़ के बैठे हुए हैं उनके अगेंस्ट. क्या? हाँ जी. Sit in front of your mirror and close your eyes. Breathe deeply several times. Feel yourself grounded on your chair. Think of many people who have hurt you in your life. Let them pass through your mind. Now, open your eyes and begin to talk to one of them aloud. Say something
like, you hurt me deeply. I thought I would never get past this. However, I will not stay stuck in the past any longer. I'm willing to forgive you. If you can't do that yet, just affirm, I'm willing. Your willingness is all it takes to move toward forgiveness. हाँ, so this is a very powerful chapter and very important chapter because हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हमने आज तक माफ नहीं किया है. It could be your parents, it could be your siblings, it could be any friend, it could be your boss, it could be your mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, your husband. बच्चे ने कभी कुछ बोल दिया तो वो भी पकड़ के बैठे हो. So there are so many people in our lives जिनको हमने आज तक forgive नहीं किया है. So what you need to do is आपने मिरर के सामने बैठना है, आंखें बंद करनी है, and take 3 deep breaths and just think of all those people who have hurt you in the past. And then open your eyes और एक इंसान को के बारे में सोचो and उसके साथ आप ये मिरर वर्क करें, उसको अपने दिमाग में रखते हुए that you're forgiving that person. And उसको आपने क्या बोलना है? You hurt me deeply. I thought I would never get over it. होता है ना जैसे कि मैं तो कभी नहीं भूल पाऊंगी इसको जो इसने मेरे साथ किया. बोलते हैं ना हम ऐसे. तो आपने बोला कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई, बहुत हर्ट किया, मुझे लगता था मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी इस बात को, पर मैं अब इस चीज में फंसी हुई नहीं रहना चाहती इस पास्ट में. आई एम विलिंग, मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हूं. आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू. हो सकता है आपके लिए अंदर से ना आए उस टाइम पे कि इतना तकलीफ दिया, इतना तकलीफ आज तक मैं भोग रही हूँ, मैं कैसे उसको माफ कर दूं. हो सकता है. तो यू कैन ओनली से आई एम विलिंग. व्हेन यू से आई एम विलिंग, तो वो धीरे 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 यू विल बी एबल टू फॉरगिव दैट पर्सन आल्सो. ठीक है. तो it's going to be a challenge. I'm telling you right now also. It's not going to be easy. It's going to be a challenging exercise. But if you need freedom from this pain, if you really want to let go of your past, you need to do this. Hanji. Take a breath and then say to the person, I forgive you. I set you free. Breathe again and say, you are free. I am free. हाँ, तो आपने उस इंसान को याद करके और ये बोलना आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू, और उसके बाद आपने बोलना आई फॉरगिव यू, आई सेट यू फ्री. क्योंकि जब आप किसी के अगेंस्ट कुछ मन में पकड़ के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी जकड़ा हुआ है उसमें. आपने उसको भी बांध के रखा हुआ है उसमें, उस प्रिजन में, चाहे उसको पता है या नहीं पता है, बट वो भी कहीं ना कहीं अटका है उसमें. So you set that person free and you set yourself free, which is very important. Anji. Notice how you feel. You may feel resistance or you may feel relief. If you feel resistance, just breathe and affirm, I am willing to release all resistance. हाँ, अगर रेजिस्टेंस आए, हो सकता है ना कि मन में आए कि कैसे छोड़ दूं, कैसे भूल जाऊं मैं ये सब जिसकी वजह से मैं आज तक भुगत रही हूं, मैं कैसे भूल जाऊं. But then at that moment, if you're resisting it, just say, I'm willing to release the resistance. Yeah. I remember जब 2010 में my mother had a seizure. घर में उनको फिट पड़ गया था और हम उनको एक हॉस्पिटल में लेके गए, and she was in ICU for the night, and doctor said कि इनका sodium level कम हो गया था, इस वजह से हुआ है, and they raised the sodium level and all, and then they ICU में थे तो सारे test हुए and all, and for one of the tests when the ward boy was taking her and shifting her from the stretcher to the वो जो machine के आगे जो bed होता है उसके ऊपर, he dropped her on the floor. And मम्मी का हिप बोन फ्रैक्चर हो गया. हिप बोन फ्रैक्चर हो गया, उसकी वजह से my mother was bedridden for 10 years.
And initially it was so difficult for me to forgive that person. I could not forgive that hospital. Even today, somewhere that anger, that hurt is still there. छोटा सा है अभी भी, निकला नहीं है पूरा, अभी भी है थोड़ा सा. But it was very difficult for me to release that, because of that one incident, because of that one person's carelessness, my mother suffered. We all suffered with her for 10 years. She was bedridden. So it was not easy for me. I was resisting it. I was resisting for the hospital. I was resisting. I didn't see that person. I didn't even know who that person was. पर वो था ना कि एक बंदे ने गिराया, उस बंदे ने गिराया, इस हॉस्पिटल में हुआ है, और आईसीयू, मतलब आईसीयू से ले जाते टाइम कर दोगे, मतलब क्या गारंटी है कि तुम यहाँ पे लोगों का अच्छे से इलाज कर रहे हो. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी. It took me a lot of time to forgive that hospital and the staff of that hospital. And I'm telling you, and थोड़ा सा अभी irritant अभी भी है मेरे पास, but पूरा नहीं है, जा चुका है, इसलिए मैंने हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया है, but it is still there. Yeah, so when it is there, you just have to say, I am willing to release the resistance. So I'm going to do this today. Anji. As you continue to do this exercise today or another day, expand your list of people to forgive. Remember, forgiveness is not an event, it's a process. You may need to keep working on one person a little longer, each time going a little deeper into forgiveness. हाँ, मतलब ये कोई इवेंट नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो हो गया. पता नहीं कितना गहरा है वो घाव, वो दुख कितना गहरा है, वो पेन कितनी गहरी है. एक बार में नहीं हो सकता. मैं कह रही हूँ ना, मैं आज तक, इमेजिन करो 2010 में हुआ था, we are in 2022. I am still holding on to little bit of it. तो कितनी लेयर्स होंगी ना उसकी कि मैं कितनी बार कर चुकी हूँ और अभी भी कहीं ना कहीं रह गया है. तो इट इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस. एंड इस प्रोसेस में क्या होता है, एक एक करके वो लेयर्स जो है ना, वो तकलीफ की जो गहराई तक जाएंगे ना हम, तब जहां पर वो सबसे नीचे तक जब तक नहीं जाएंगे, वो फॉरगिवनेस होगी ही नहीं, होगी ही नहीं. So you'll have to keep doing it so that you go deeper into it to forgive that person. Anji. This may be a day when you can forgive several people. It may be a day when you can forgive only one. It doesn't matter. However, you do this exercise is the right way for you. The universe and forgiveness see you're showing up. At times, forgiveness is like peeling away the layers of an onion. If there are too many layers, put the onion away for a day or so. You can always come back and peel another layer. Acknowledge yourself for even being willing to do this exercise. You are healing. So this is very important. अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है किसी को माफ करने में और आप थोड़ा सा ही कर पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बार बार उसमें नहीं लगे रहना है. So आपने आज कोशिश करी, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको वहीं पे. किसी और को कर सकते हो, जिसने कम हर्ट किया हो उसको कर लो, कल किसी और को कर लो. जब तक आपको लगता है कि हाँ, now I think I can tackle that, then go to that particular person's if that hurt and then start working on it. अपने आप को तकलीफ नहीं देनी है कि मैंने इसको ही आज खत्म करना है. अगर नहीं कर पा रहे हो, तकलीफ हो रही है, उसको वही छोड़ देना. Do somebody else, take up somebody else. हो सकता है किसी ने बहुत हल्का सा कुछ तकलीफ दिया और आप उसको, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया हो, जैसे मेरे पड़ोसियों ने कंप्लेन करी है ना, तो forgive them, उनको forgive कर दो. ऐसे कोई छोटे मोटे जो आसपास जो बातें मन में लगी हुई है ना, उनको forgive कर दो. जैसे कंचन को आज कोई सब कुछ बोल के गया, you can forgive that person today, right? But अगर कोई बहुत गहरी तकलीफ, बहुत गहरा चोट, बहुत गहरा नासूर बन चुका है ना, उसको एक बार में मत छेड़ना. थोड़ा सा छेड़ के छोड़ देना. उसके बाद जब दोबारा से कर पाओ तब करना. एंड बी वेरी करेजियस एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ
that you actually at least making an attempt to do it, and keep doing the attempt. It's a very, very, very challenging chapter. And I'm telling you, you all are very courageous, very extraordinary people who are actually working on mirror work and reach this level. Yeah. And hats off to all of you. हाँ जी पढ़े. जी एक प्रश्न आ रहा है. हाँ जी. Trying to analyze, अगर हम किसी को फेस नहीं करना चाहते हैं, हम अगर सामने से दिख गए तो हम दूसरा रास्ता ले लें, तो मतलब हमको कोई ग्रज है ना उनके अगेंस्ट. बिल्कुल बिल्कुल. तो वहीं पर हमने उनको फॉरगिव नहीं किया. Yes, definitely, definitely. Yeah, thank you. हाँ जी पढ़े वरुण. The power is within you. Your day 15 journaling exercise. Put on some soft music, something that will make you feel relaxed and peaceful. Now take your journal and a pen and let your mind drift. Okay, so अगर आपको relax करके ये काम करना है, तो you can also take a bath and you can wear something which is comfortable. You can light a small जैसे aroma वाली कोई candle जला सकते हो, which gives you that kind of peace, and you can play some soft instrumental music or any music which you love, but it should be soft, not be something which actually आपको और ज़्यादा अंदर से आपको ना energy को आपको बढ़ाए. Something which soothes you, which actually calms you down. ऐसा कुछ आप music चला सकते हैं before doing this exercise. हाँ जी. Go back into the past and think of all the things that you are angry with yourself about. Write them down. Write them all down. You may discover that you have never forgiven yourself for the humiliation of wetting your pens in the first grade. What a long time to carry that burden. हाँ, तो पता है जब एक्सरसाइज आप करोगे ना, you will be surprised. ऐसी चीजें निकल के आएंगी जिनका आपको याद भी नहीं होगा. अच्छा ऐसा भी हुआ था. Like for example, I think in seventh or eighth standard. I don't remember the standard. And I mean, I was not aware of menstruation and all that. It was a hush kind of a subject. And suddenly, my whole skirt got strained. And one of my teachers called me and she said, "Ke mera ghar paas mein hi tha." So she says, "Just go home and speak to your mom." And it is so humiliating in front of the whole class. And kahin na kahin you keep holding on to it कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मुझे पता कैसे नहीं चला, all those kinds of things. So this is one such incident which just flashed. शायद मैंने जब भी एक्सरसाइज करी थी तो मुझे कभी ध्यान भी नहीं आया था, बट जैसे ही उसने वो बोला ना वेटिंग योर पैंट्स, तो मुझे सडनली ध्यान आया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. राइट. सो आपको नहीं मालूम जब आप लिखना शुरू करोगे तो क्या क्या चीजें निकल के आएंगी. जस्ट कीप राइटिंग. हाँ जी, नेक्स्ट. Now take this list and write a positive affirmation for each item. If you wrote, "I will never forgive myself for the incident," then your affirmation could be, "This is a new moment. I am free to let go." Remember that sometimes it's easier to forgive others than to forgive yourself. Yeah. Often we demand perfection of ourselves and are harder on ourselves than on others. However, it's time to go beyond this old attitude. Forgive yourself. Let it go. Give yourself the space to be spontaneous and free. Yeah. तो अक्सर क्या होता है, हम अपने ऊपर बहुत हार्ड होते हैं ना. मैं ऐसा कैसे कर सकती थी, मैंने ऐसा क्यों किया, और कोई कर देगा तो चल कोई नहीं यार, बच्चा है, उसको नहीं पता चला होगा. बट व्हेन इट कम्स टू योरसेल्फ, यू वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ. आप अपने साथ बहुत ही सख्त हो जाते हो, अपने आप को नहीं फॉरगिव कर पाते हो. सो टुडे व्हेन यू डू दिस, यू जस्ट हैव टू, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है आपके साथ, वो इंसिडेंट के सामने आपने एक अफर्मेशन लिखना है. सो यू कैन राइट, दिस इज अ न्यू मोमेंट, आई एम फ्री टू लेट गो. आपने सिर्फ लेट गो ही तो करना है उसको. हाँ जी. And now put down your journal and go outside to a beach, a park, even an empty lot, and let yourself run. Don't jog, run wild and free. Do somersaults. Skip along the street
and laugh while you are doing it. Take your inner child outdoors with you and have some fun. So, what if someone sees you? This is for your freedom. हाँ, तो आज आपने क्या करना है, ये वाला करने के बाद जस्ट गो आउट, पार्क में चले जाओ, आपके आसपास में कोई बीच है वहां चले जाओ, एंड सड़क पे जैसे हम ना भागते हुए इधर से उधर भागते थे ना, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग वे में, ऐसा कुछ कर लो. जस्ट लेट योरसेल्फ फ्री, मतलब जैसे कहते हैं ना, अनशैकल योरसेल्फ, जस्ट जैसे कहते हैं ना, रन वाइल्ड और समथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ करो जैसे जिससे आपका अंदर वाला बच्चा जो है ना वो खुश हो जाए, है ना. ऐसा कुछ करना, कर लेना सब. Okay, your hard thought. Your hard thought for day 15. I can forgive. Yes. I am one with life. Okay. You know what to do. बोलूं क्या दोबारा से? Right hand on your left chest, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के, आंखें बंद करके आपने 3 बार बोलना है, I can forgive. 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 Yes. Yeah, Varun. I am one with life, and life loves me and supports me. Therefore, I claim for myself an open heart filled with love. We are all doing the best we can at any given moment, and this is also true for me. The past is over and done. I am not my parents or their patterns of resentment. I am my own unique self, and I choose to open my heart and allow love, compassion, and understanding to flush out all memories of past pain. I am free to be all that I can be. This is the truth of my being, and I accept it as so. All is well in my life. Okay, आप लोगों में ना बहुत लोगों ने सुना भी होगा और अपनी फैमिलीज में देखा भी होगा कि अगर पेरेंट्स का किसी के साथ रिजेंटमेंट है फैमिली में, तो वो बच्चों को भी पास ऑन हो जाता है. देखा किसी ने? Yes. फैमिलीज में होता है ऐसा? Yes. तो Yes, ma'am. हाँ, so जब when you read this, you are not your parent and you're not their resentment. उनके जो रिजेंटमेंट के पैटर्न्स थे वो आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो उनके साथ था. Why are you holding on to it? मतलब ये मैंने बहुत देखा है कि मम्मी का बुआ के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था, तो मैं भी बुआ से बात नहीं करूं, मैं उनके बच्चों से नहीं मिलूं. Why यार? But this is happening in the world. This is happening in our lives. So after this chapter, just get this. You are not your parents' pattern of resentment. अगर वो resentment hold करके गए हैं या पकड़ के बैठे हैं, you don't have to. You are a different human being. You are an individual. And you have all the choice to forgive them and forgive yourself. And maybe forgive your parents for that. It's very important. मैंने जैसे ही ये सेंटेंस पढ़े तो मुझे ध्यान आ गया कि बहुत फैमिलीज में है ये, मतलब फैमिलीज बिखर गई इस चक्कर में, बच्चे तक, सेकंड जनरेशंस तक. Do you think it's worth it? No, it's not. That's not the kind of world we need, yaar. We need a world where everybody is one. Yeah? Okay, let's read the meditation. Everybody sit straight, close your eyes, and just let each and every word sink in. Hanji. Your day 15 meditation for forgiveness. Here are some positive affirmations for forgiveness. Repeat them often. The door to my heart opens inward. I move through forgiveness to love. As I change
my thoughts, the world around me changes. The past is over, so it has no power now. The thoughts of this moment create my future. It is no fun being evicted. I refuse to be helpless anymore. I claim my own power. I give myself the gift of freedom from the past and move with joy into the now. There is no problem so big or so small that it cannot be solved with love. I am ready to be healed. I am willing to forgive, and all is well. I know that old negative patterns no longer limit me. I let them go with ease. As I forgive myself, it becomes easier to forgive others. I forgive myself for not being perfect. I am living the very best way I know how. It is now safe for me to release all of my childhood traumas and move into love. I forgive everyone in my past for all perceived wrongs. I release them with love. All of the changes in life that lie before me are positive ones, and I am safe. Yeah, I am safe. Just let this, resonate in your mind all the time. I forgive myself. I forgive others. I forgive everyone in any past for all perceived wrongs. I release them with love. Just release all the hurt, all the pain of your past. Yeah. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. Anybody wants to say anything before we say bye-bye? फॉरगिव करने से ना आप फ्री हो जाते हो. हाँ, तो करने से होते हैं ना, करे तो सही. इतनी गहरी जड़ें पकड़ी हुई है ना, वो हर्ट, जो भी हमारे तकलीफें हैं जो हमने अपने आप. Can you imagine what it said? Perceived. Perceive क्या होता है? जैसे हमने उसको देखा है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे परसेप्शन से. जरूरी नहीं है वो गलत ही थे, हमें गलत लगे. We perceive it as something which was wrong done to us. कितनी बार ऐसे होता है कि मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने 50 साल तक की उम्र में पहुंच जाते हैं
और अपने माँ बाप को उन्होंने माफ नहीं किया होता, कि उनको लगता है कि उनके माँ ने उनसे प्यार नहीं किया, अपने बड़े भाई से, मेरे से प्यार करती हैं. And when you ask mother, for mother both the children are same. पर वो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिंदगी में, बचपन में, और उसने उसको उसके हिसाब से, क्योंकि उसने वैसे परसीव किया, उसने उसको इस तरह से देखा कि मुझसे प्यार नहीं करती हैं, और जिंदगी भर उस चीज के लिए उसने अपनी माँ को कभी माफ नहीं किया कि मेरी मम्मी ने मुझे कभी प्यार नहीं किया. सो दैट इज अ परसीव्ड हर्ट. वो था नहीं वहां पे, वो हमने अपनी तरफ से सोच में सोचा और उसको सच मान लिया. ऐसा बहुत कुछ है हमारी जिंदगी में. जब आप लिस्ट बनाना शुरू करोगे ना, और लोगों के बारे में सोचना शुरू करोगे, किस किस ने आपको हर्ट किया, किस किस को आप फॉरगिव करना चाहते हो, आई मीन यू विल बी सरप्राइज्ड कि क्या क्या निकल के आता है. मैम, हेलो मैम, आवाज आ रही? हाँ Yes. मंजू बोलो. हाँ मैम, एक क्वेश्चन है मन में कि जैसे आपने कहा, अभी बुक में भी पढ़ा, जैसे हम किसी को माफ करते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि उस तरफ भी ऐसी फ्रिक्वेंसी पहुंचती है कि वो भी फिर हमें, क्योंकि दोनों में ही होते हैं ना क्रशेस, तो जरूर एक कभी कभी होता है कि एक तरफ से ही हो, कभी कभी दोनों की तरफ से ही हो जाता है, जैसे आमने सामने बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाना इस तरह से, तो फिर जैसे हम उसको माफ करते हैं तो ऐसा है कि उसको भी लगेगा कि मुझे माफ करना चाहिए. हो सकता है, और ये डिपेंड करता है आपकी फॉरगिवनेस कितनी डीप है, आपने कितनी सिंसियरिटी से और कितने डीपली उसको फॉरगिव किया है. बिकॉज वाइब्रेशंस तो जाती ही हैं, अपने आप इंसान खुद बदल जाते हैं, खुद आके बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने गलत किया था तेरे साथ. हाँ ये, अभी पढ़ा ना बुक के अंदर, तो होता मैंने है, कहा दिस हैपेंस, सच में ऐसा हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है. या ओके, एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? ओके देन, आज वैसे भी थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर ही चला गया हमारा. सो एंजॉय योर संडे, एंड मनीषा एंड आई विल सी यू अनदर an hour and a half, 2 घंटे बाद मिलेंगे. And rest of the people will meet tomorrow. And अभी तो ये थर्ड वीक शुरू हो गया, और ये जैसे आज का चैप्टर बहुत चैलेंजिंग है, आगे आगे थोड़ा सा हायर लेवल का हो जाएगा. तो क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो इतना तो हम समझ ही गए हैं, है ना. इतने अच्छे से तो हमें आ गया अपने आप को प्यार करना, मिरर वर्क करना. And as you saw your progress from 7 to 14 days, you know you're doing very well. So all the very best, and I know you guys are doing very well. बहुत मेहनत कर रहे हो, and you will definitely get the result. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. Ma'am, Bye bye. मैम आपने कल देखी मूवी, कैसी लगी? आपने कल मूवी देखी जुग जुग जियो? नहीं समझ आई? बेकार है, मतलब मेरे परसेप्शन से बेकार है. I mean, हो सकता है किसी को अच्छी भी लगे, मेरे हिसाब से मतलब मेरे लिए it was waste of time. For me it was waste of time. I could have done something better. चलो, okay, bye bye, see you tomorrow.